Okay, welcome students. So in the day 3 of our chapter, that is the electricity. Okay, so previously here we already learned what we learned. Okay, we learned about the Ohm's law. Okay, we already learned about the Ohm's law, and also from the Ohm's law we know that V is directly opposite to the current, and V is equal to Ri, where R is the constant, just neurology. Okay, where R is the constant, we already know that is called as the resistance, and from the resistance, okay, this is the previous knowledge. Okay, previous knowledge that we get from the last class. All right, also we know and resistance. Okay, so resistance of the conductor is R is equal to P by I. That as equation becomes to know, right? And I already told you that resistance is anything. Okay, this is the property of the substance. कोई भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो एल्टी करंट को थोड़ा रुकाने के लिए कोशिश करता है. Okay, that is called the resistance. That's we already know. Okay, so today in our class we are going to study about the equivalent resistance. Okay, equivalent resistance, and also that is the types of the connections. Okay, connection क्या कनेक्ट करेगा, कोई भी बल्ब हो या ट्यूब हो या कोई भी ना फैन, तो वो सब हम बोला था ट्यूब हो या फैन हो या कोई भी जो एप्लायंसेस जो है इलेक्ट्रिक करंट में कनेक्ट करता है, they are what? They are a resistance only. Okay, so here we are going to study the types of the connection, series connection and parallel connection, and also their difference. Okay, and the equivalent resistance. Let us learn first of all. Let us learn the types of the connections. Okay, so types of the connections. Okay, so there are two types of the connections. The first point is that series connections. Okay, series connections. Okay, those connections मगर क्या कनेक्शन करने जा रहे हैं, जैसे कि अप्लायंसेस को. ओके, मगर कहाँ में, इलेक्ट्रिकल सोर्स में, राइट? ओके, those connection in which the electrical appliances, okay, instead of appliances we can write resistors. Okay, क्योंकि हर appliances में resistance होता है ना, थोड़ा सा it oppose the flow of the current, तो इसलिए वो लोग को resistors का नाम से भी जाना जा सकता है. Okay, fine. So those connections in which the electrical appliances or resistors are connected, मगर कैसे? Okay, are connected one by one. Just simply one by one, we can say. Okay. और नहीं तो one after another. Okay, एक के बाद एक. Okay, just like we are joining the hands. My hands, I hold someone, then like I have to just use here when it comes. Okay, one by one, or you see one after another. Okay, it's called series connections. Okay, so how? Let us see here. This is a bulb. We already know this is denoted by this symbol. This bulb, right? These two bulbs are connected in a circuit. Okay, so yes, I told you this longer end is positive and shorter end is negative, and current is the flow from the positive terminal to the negative terminals. Okay, so this point. So this is the one.
this is the series connection. ये एक बल्ब जो है, these are bulb. ओके, ये बल्ब जो है एक के बाद एक कनेक्ट किया है ना, तो यही है ये. दिस इज जस्ट ओनली फॉर दिस ओनली. ओके, बट हम लोग ये फिजिक्स में कैसे डिनोट करेंगे ये सबको. हम अभी तक ऑन नहीं किया है. ओके, ये इसको ऑन कर देगा. ओके, जस्ट कनेक्ट करो इधर में, और नहीं तो इसको ऐसा करके ज्वाइन करो. ये कनेक्शन है, कनेक्शन हो गया. ओके, तो ऐसा लगेगा तो पोजीशन होगा, ये कनेक्शन होगा तो ये ऑन पोजीशन है. राइट, सो दिस इज सेम, दोनों सेम है, मगर इसमें हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस इसमें डिनोट करेगा. ओके, रेजिस्टेंस वी टेक इट एज R1 R2 R3, मतलब बल्ब 1 बल्ब 2 बल्ब 3, तीन बल्ब है ना, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, वो लोग किसे कनेक्ट करें, एक के बाद एक कनेक्ट करें ना, वन आफ्टर अनदर रेजिस्टेंस और अनदर बल्ब ना. तो ऐसा वाला सीरीज, ऐसा वाला कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलता है. फाइन. ओके, सो दिस पॉइंट्स वी हैव टू नो. ओके, तो मगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जानना पड़ेगा. सीरीज कनेक्शन में क्या क्या होता है, हाउ एंड क्या क्या होता है ना. तो ओके, सो हियर ना here comes the characteristics of the series connections. Okay, so number first characteristic is what? That is the all the appliances or the resistance होता है बोला था ना. Okay, all the appliances are connected one by one, or one to another. Okay, so this is the first point. Okay, here in the same second point here, same current I. Okay, current को हम लोग I डिनोट करते हैं, right? Same current I flow in all the appliances. सब appliances में सेम करंट, देखो तो इधर से करंट I फ्लो कर. ओके, सेम करंट I फ्लो कर है, मगर इधर में भी आ रहे हैं ये करंट से, इधर में भी आ रही है, इधर में भी आ रही है, लास्ट में करंट हो जाएगा सेम करंट. ओके, सिर्फ एक ही करंट जो उसमें पार करके पास करके जा रहा है. ओके, दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड. बट जानना है ये बल्ब सपोज हम लोग 20 वाट का है, 30 वाट का है, ये 45 वाट का है. ओके, ये 20, 30, 45 जो है वो लोग का अलग अलग वोल्टेज खाता होगा अकॉर्डिंग टू देयर पावर, राइट? सो 45 वाट पावर और 30 वाट और 9 वाट बल्ब जो है उसका अलग अलग पोटेंशियल. ओके, जो उसका अलग अलग पोटेंशियल में काम करेगा. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू कम देयर इन द नंबर थर्ड पॉइंट. ओके, सेम होगा तो सेम होगा. ओके, सपोज घर में भी हम लोग सपोज सोचो 9 वाट का बल्ब लगाया है, इसमें भी 9 वाट के बल्ब लगाया है, तो सेम पोटेंशियल खाएगा. मगर इसमें सपोज इट इज 14 वाट का बल्ब लगाया है तो वो लोग भी अलग से. ओके, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑल द appliances have different potential difference, or नहीं तो different voltage. Okay, it work on the different voltage you can see in that also. Okay, so R1 here will produce the V1. Okay, so V1. Okay, so ये दोनों का बीच में voltage V1 होगा, और ये R2 का ये दोनों के बीच में V2 होगा, और इसमें क्या होगा V3, और कोई भी appliances R4 होगा तो उसका भी V4 होगा. Okay, so from here we know that different appliances have the different potential difference. Got the point? Yeah, so this point. But
same current I flow in all the appliances. Yeah, this point. Yeah, from here we are going to get the conclusions. One, okay, what is that? ये बल्ब जो है सपोज ये बल्ब फ्यूज हो गया काम करना बंद कर दिया okay if one appliances is fused okay then what do you think all the other appliances all the other bulb will give light no it will not give the light why because same current I only one current I is flow ना पर इधर में डिस्कनेक्ट हो गया तो करंट पास करके जाएगा no okay so current will not pass through okay all others okay so once is disconnect okay if one appliance is disconnect or the fuse then other also will not work okay suppose इसको काम कर रहे हैं और ये 20 वाला खराब हो गया ओके ये 20 वाला खराब हो गया तो ये कनेक्शन जो है जो सर्किट डायग्राम जो है कंप्लीट हुआ है क्या नो ना ओके सर्किट डायग्राम इज नॉट कंप्लीट if the circuit is not complete that means that ये नेगेटिव ये पॉजिटिव से करंट फ्लो करके नेगेटिव में आना है ना तो उसके साथ तो कनेक्ट हुआ ही नहीं तब तो क्या होगा that currents okay will not okay flow there then all the other appliances will not work then we come to number 4 okay so here I grab this one yes you can one battery is damaged then that means that एक दूसरा वाला जो पुराना वाला है एक जो है नया वाला है बोलकर तब तो काम चलेगा and it depends on the how much voltage and what voltage ये बल्ब जो काम करता है ना उसका डिपेंड होता है ओके कितना वोल्टेज में काम करता है ना वो उसमें डिपेंड करता है ओके एक ही बैटरी में काम करने वाला अभी तक तो हम एक भी नहीं दिखाया ओके एक सेल से मगर बैटरी होगा तो चलेगा एक सेल से काम करने वाला बहुत मुश्किल होता है ओके इवन एलईडी बल्ब जो है उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ओके तो दो बैटरी एक सेल होता है ना हम लोग को ड्राई सेल लेता है उसमें 1.5 ओके वोल्टेज होता है 1.5 वोल्टेज में काम करने वाला सामान बहुत ये होता है ना मगर थोड़ा 3 वोल्टेज वगैरह होते समय क्या करता है हम आराम से मतलब काम चला सकते हैं जैसे कि टॉर्च लाइट वगैरह चला सकता है ओके सो दैट विल कम इन द अदर पार्ट आल्सो ओके सो जब बैटरी हम लोग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बैटरी वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर रेजिस्टेंस टू द पॉइंट गो ओके तो ये बैटरी खराब हो गया तो बैटरी को चेंज करो बस हो गया बैटरी खराब हो गया तो कुछ भी काम नहीं चलेगा ओके जस्ट कीप इन माइंड तो बैटरी खराब हो गया तो बैटरी नया वाला बैटरी डालना पड़ेगा ओके सो दैट्स व्हाई and number 4 point here all appliances have the different potential difference we already know here and in the number 4 what will come and the number 4 here will come here if any appliances okay if any appliance or any resistance okay or you say resistor now okay so just leave it okay any appliances okay is I already mentioned here na? Okay if any appliance is fused okay then other appliances will stop working. Sorry? तुम पहला क्लास पोटेंशियल डिफरेंस के क्लास में ज्वाइन नहीं करता है क्या? Yeah. Kevin, that's only I'm talking about. Okay, why? Because here
R1, suppose this is the 9 watt, this is also 9 watt, this is a 14 watt. Okay, so all these appliances have, they used to work at the different voltage only. Okay, तो हम इधर में 9 वाट का एक बल्ब इस्तेमाल करेगा और इधर में हम 14 वाट का बल्ब इस्तेमाल करते समय ना वो लोग अलग अलग वोल्टेज में काम करता है, क्योंकि उसमें कंज्यूम करने वाला पावर जो है, ओके, कंज्यूम करने वाला पावर जो है जो अलग अलग है ये दोनों के बीच में 9 एंड 14 वाट में। ओके, तो वो लोग का पावर कितना कंज्यूम करना है उसके हिसाब से वो लोग अलग अलग वोल्टेज में क्या काम करता है। Okay, that's why they used to have the different distributions of this potential difference. Okay, जो हम लोग का ये इधर में हम लोग का जनरली हम लोग के इंडिया में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हम लोग का पॉजिटिव एंड नेगेटिव जैसे कि लाइट एंड न्यूट्रल वायर में आता है, दिस इज फ्रॉम द 220 वोल्ट से लेकर 240, ओके, 240 वोल्ट का बीच में होता है। ओके, मगर वो होने से भी कोई कोई अप्लायंसेस जो है कमती वोल्टेज में काम करता है, कोई कोई हायर वोल्टेज में काम करता है। ओके, हर अप्लायंसेस का सेम नहीं होता है। ओके, तो ये केस में ये सीरीज में क्या होता है, एक कर एक लगाया गया है। ओके, तो वही केस में क्या होगा, वो अप्लायंसेस लोग का अलग अलग वोल्टेज में ही चलेगा, मतलब काम करेगा। Okay, so that's going on. Okay, but in parallel आते समय हम लोग का अलग से आएगा। Okay, parallel में क्या होगा, there is the same voltage will be flowing. Okay, same voltage will be there in between the all the appliances. Okay, but different current will be flow. Okay, different current will flow in all the resistance. And that point also will come. Okay, Jamin? Yeah. Okay, so here if any appliances is fused, then other appliances will stop working. Okay, will stop working. Okay, so here, because of that reason, what will happen here again, those appliances which are connected in series, suppose the bulb, if we are connected here, then they also will produce a very dim light. Okay, so they will give a very dim light. Okay, Lito Nuri, why you are late? Okay, so here, yeah, okay, you see the bulbs in the series connection. Okay, we can see. Okay, or you see the it will break. Okay, it will produce, okay, it will produce a dim light. Okay, it will produce a dim light. Yeah, suppose if we connect that, okay, all the bulb, okay, light बोलेगा तो कुछ लाइट देने वाला बल्ब हो या कोई भी होना पड़ेगा ना। Okay, we bought it. Okay, it will produce a dim light. Okay, so this is the number 4 points. Okay, anything else here? Nothing is here. Okay, so they will produce. Okay, yeah, and one appliances is off, then others also will stop working. Yeah, this is all about the what you call the you see the series connections and how the appliances are connected. Okay, and after this one here only we are going to learn about the parallel. Okay, and equivalent resistance and all I will give you later. Okay, because equivalent resistance and its derivations also will be there. Okay, derivation are also coming now. Okay, so this is all about the series connections. Okay, and now we'll proceed to the parallel connections. Okay, yeah. So the first is already series and number 2 is the okay, parallel connections. Okay, parallel connection of the resistor or the resistance. Okay, so here comes the parallel connections.
Yeah. So here in the parallel connections, what will come here are those, okay, connections, okay, those connections in which all the appliances, okay, all the appliances or resistance, okay, so don't get confused, okay, all the appliances are connected. कहाँ से? From two common end, okay, or two common terminals भी बोल सकते हैं, okay, two common terminal or just say the end, okay. Terminal also nothing is wrong, okay. So those connections in which all the appliances are connected from the two common ends, okay, of a source, okay. So I'll call the parallel connections. I don't mention all those things, okay. So here all the appliances are connected from two common ends. So here, for example, here this is the two common endpoints. Let us take these two are two common endpoints, and from here one valve is connected here, okay, and from this same end A and B here another valve are also, is also connected, okay, and again from here again another valve, okay, so this also connected from this, and then from here what it will come the switch, yes, so this one, okay. So this is all about what? This is all about the bulb, okay. And if I draw in terms of the resistance, we are not going to draw the bulb and all, okay. So we are going to draw in this way, okay. So this is A common end, this is the common end B, and from here going to come another resistance, and again here it comes the another resistance again, yeah, which are connected from this, okay, and switch on position, and here is current from here. Now, this is all about the parallel connection, okay. This is in the form of the bulb I draw here. This is any resistance, okay. So here, the characteristics, to know the characteristics, what we have to do, you look here, up to here the current I is flow here, right? So up to here the current is flow from this, okay. Then what will happen from here again, this current is up to here coming. And then what happens, it is distributed here, okay. The current is distributed, okay, because they are connected from two common endpoint. Then मेरा अपना current, उसका अपना current, उसका अपना current, अपना current लेकर जाएगा ना. So that's why, okay. So here the current I1, here current I2, and current I3 will be there, okay, because they are connected from the two common endpoint, I1, I2, and here I3. Okay, so all are having all this one, okay. And then, but what happened? The difference is here all the appliances, okay. So even though they are having a different, consuming the different power also, but we are using from this source, and different currents are flowing to them, okay. Then what will happen? All of the appliances will have the, I don't have space, you can write down also, no problem. They have the same voltage, okay. All the appliances में क्या होगा? Same voltage, okay, मिलेगा. Same potential difference, same voltage मिलेगा, okay. So that's why what happen? They will produce, or they will give a very bright light, okay. If we use what I call this bulb and all, okay. So high peak voltage, okay. So we'll get all these things, yeah. So this is all about the diagram, okay. And here see, if one bulb is fused here, what do you think?
If one bulb is fused here, then other also will stop working. No. Okay. If one bulb is also fused, then nothing will happen. Okay. Q. Why? Because here all the appliances get the different currents. I1, I2 and I3. ओके ये इधर में ये क्या होगा टू कॉमन एंड पॉइंट से कनेक्ट हुआ है तब तो ये बल्ब को फ्यूज हो गया हाँ ये फ्यूज हो गया तो उसका करंट यहाँ से आकर यहाँ में जाना बंद कर दिया ना ओके इट कैन नॉट कम अप टू हियर राइट बट अदर्स फॉर अदर बल्ब दे आर स्टिल गेटिंग द करंट I2 I3 ना तो मगर ये दूसरा एंड पॉइंट में पार होकर जो बैटरी में जा रहे हैं ना तो इसका वजह से क्या होगा अदर बल्ब में कुछ इफेक्ट नहीं होगा इफ वन बल्ब इज स्टॉप वर्किंग ओके so this point okay so we have to know this point then let us come to the characteristics of these parallel connections yeah oh this will be number 5 I think yeah before yes I write let's change it okay this will be number 5 for that one. Let us understand. Okay. So then we will proceed to this one characteristics. Okay. What is characteristics of parallel connections? Okay, what are the characteristics of the parallel connection? Just like that on the series, you can write down here all the appliances are connected. That's it. From two common, what do you write? Okay, from two common endpoints. Okay, all appliances are connected. Okay, from two common endpoints. Okay, so this will be the first point. Okay, and in the second point, let us come. Okay, in the second point, what you can write here, all the appliances, okay, all the appliances have, okay, or get, all the appliances get different currents. ओके दो कमन एंड पॉइंट से ज्वाइन करेगा तो वो लोग का अलग अलग करंट मिलना चाहिए ओके ऑल द appliances get a different current I1 I2 I3 that I think also normal okay all the appliances get different currents okay आप क्या है नंबर I1 नंबर 3 में क्या होगा okay so okay all the appliances work okay the same voltage okay all the appliances work in the same voltage okay number 4 points okay okay what we write okay yeah this one if any okay if any appliances okay if any appliances stop working okay if any appliances stop working okay nothing will
happen. Okay, or nothing will affect. Okay, or nothing will happen to the other appliances. ओके जैसे कि एक अप्लायंसेस जो उधर में काम करना बंद हो जाएगा बंद हो जाने से भी क्या होगा दूसरा अप्लायंसेस में क्या होगा कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा ओके कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि दे कंटेन दे फ्लो द चेयर सॉरी डिफरेंट करंट I1 I2 I3 ना करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या ये काम करना बंद हो जाता है ना मगर वो लोग अपना अपना का करंट I1 I2 I3 अपना अपना का जा रहे हैं ओके तो इसलिए कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा ये I2 काम नहीं होने से I1 एंड I3 तो क्या अप्लायंसेस R1 एंड R2 ओके हम नहीं लिखा है इसमें ये इसको R1 लिख सकते हैं दिस इज R1 R2 R3 ओके वो सब काम करते रहे ओके लेट्स डू एट R ओके Y for resistance हम उधर में तो verb भी है verb 1 verb 2 verb 3 ओके so this is the point okay and okay, last point में what can put there? Number last point में okay. Number 5 में they will produce the bright lights. Okay. तो वो लोग क्या काम करने से भी क्या होता है ब्लैक लाइट करेगा ओके दे देगा ओके या okay so you have to upload there okay so give the difference between the series and the parallel connections okay at least you must try to give the 5 points okay I give you 5 points but you can include all those what I call the diagram of around 6 points also you can give no problem okay yeah these points yeah this is all about series and parallel last time just I forgot to give the resistivity in the resistance we already derived the factor in which the resistance of a conductor depends right and then we already done the equation and there we have to derive one equation called as the resistivity okay resistivity that one I will give after this what we call equivalent resistance otherwise all of them will mix up then we will get confused okay you will get confusion okay so I will not give that one okay yeah. Okay now we are going to come to the equivalent resistance or नहीं तो effective resistance का नाम से भी लगता है okay also okay so equivalent resistance okay और उसको क्या नाम से भी जाना जाता है इफेक्टिव resistance okay equivalent or effective resistance okay so here what you have to know effective resistance or equivalent resistance is the sum total resistance of all the resistors here appliances नहीं आएगा okay just keep in mind the sum total resistance of all the resistors connected in where connected in series or parallel हम दोनों का कॉमन डिफिनीशन पहला देगा okay I'll give you the common definitions okay for all these things okay yeah okay okay so here we come the sum total resistance of all the
it clear? No? Okay. The sum total resistance of all the resistors connected in series or parallel. Okay. The sum total resistance of all the resistors connected in series or parallel. Okay. Parallel connections. Okay. It's called, what is that? Equivalent resistance. ये कॉमन है किस किस का? This is common for these two. That is the series and the parallel. Hey Tamu Gyani, why you are left? Why you just join now? I will report, okay, in the group. Don't worry, okay? I am going to report you. Okay, the sum total resistance of all the resistors connected in series or parallel connection is called the equivalent resistance. Okay, so you know it is denoted by some of the you will find out, okay, R equivalent, okay, REQ, okay, or कभी मैं R effective or REMF ऐसा भी मिलेगा, ओके। कोई कोई ये अलग अलग बुक्स अलग अलग ऐसा देता है, ओके, R equivalent और R effective, ओके। मगर हम लोग सीरीज के लिए आएगा तो क्या आएगा, ओके, फोर सीरीज के लिए कैसे आएगा, RS आएगा, ओके। जस्ट फॉरगेट अबाउट जस्ट R of equivalent और R of effective resistance, मतलब equivalent resistance और effective resistance ना, ऐसा वो देने के लिए बोल रहे हैं, ओके। आदित्य इज विद यू, ओके फाइन, ओके। सो फॉर सेल्स के लिए RS ऐसा डिनोट करेगा हम लोग इधर में, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। एंड फॉर पैरेलल, ओके, पैरेलल के लिए RP, okay, P for parallel resistance, okay, equivalent resistance, and S for series का equivalent resistance, ऐसा हम लोग डिनोट करेगा, okay, fine, yeah. Then let us come to the particular points के लिए, जैसे कि define और नहीं तो what is the equivalent resistance of series, okay, equivalent resistance of series connection, and also derive its formula, okay. So this derivation is very important, okay? Yes. Yeah, homework, don't forget Hamugani, latecomers and all. Okay, so homework already given. Okay, so here will come to our point, that is, the first point is that equivalent resistance. Okay, equivalent resistance in series. Okay, equivalent resistance in series and its derivation. Okay, हम लोग formula derivation सीखेगा इधर में, how we can derive the formula. Okay, we call it derivations here in physics and all, right? Okay, so here the definition comes like this. Okay, question में आएगा तो what is equivalent resistance in series and derive, और नहीं तो derive, ये equation एक equation है उसका, उसको भी दे सकता है, okay। चलो, the sum total resistance of all the resistors means appliances बोला था, don't get confused, okay। That is the appliances connected in, okay, the sum total resistance of all the resistors connected in series, okay,
is called equivalent resistance of series connections or in series. It's okay, okay, of series connection. Okay, so therefore इधर से क्या आता है RS equivalent in series. Okay, S ने हम लोग डिनोट करते हैं सीरीज का. इसमें क्या है अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ने क्या बोला है सम टोटल बोला है. ओके, तो जस्ट डायग्राम इज नीडेड हियर. ओके, हम तीन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं. ओके, ओके, ये की है. ओके, ये बैटरी है, बैटरी. ओके, सो this one, this we take it R1, R2, R3 and वो लोग का V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है बोला था. Okay, so here what happened here? Resistance R1, R2, R3 का सबका सम टोटल रेजिस्टेंस बोला था ना. इधर पे that's why R1 plus R2 plus R3. जब उसमें एक और हम R4, R5, R6 लगाया गया है बोले से हम लोग प्लस करके मतलब R2, R3, R4 लगा सकते हैं. ओके, ये it depends on the how much resistance we are taking here. Okay, so this is just the definition and derivations and its derivation. We are going to derive these equations. Okay, so अभी आएगा derivations. Derivation क्या derive करने का है? Derivations of RS is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, so at this point we are going to come here. Okay, so for this derivation we have to understand the figure very clearly. Okay, so here we will know here in series connection. All the resistors, okay, all the resistors कौन सा है नाम भी देना पड़ेगा. Okay, all the resistors R1, R2 and R3 are connected. कैसे? How they are connected? One by one or one after another. Okay, are connected one after another. Okay, which have okay different voltage. Okay, or different potential. Okay, different voltage क्या V1, V2 and V3 किस लिए respectively. मतलब R1, V1 and respectively. Okay, respectively they have the V1, V2, V3. All right. मगर जाता है here same current I for here. Okay. थोड़ा सा लिखना पड़ता है. Okay, here same current I ना ये current I जो flow in the circuit. Okay, हम लोग बोला था इसमें सब सेम करंट है और वोल्टेज तो अलग अलग है ना. So therefore total voltage कितना होगा? Okay, total voltage or total potential difference will be इसको V नहीं लेता है, equal to V1 plus V2 plus V3 लेता है. उसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएगा. ओके, उसके बाद तो क्या आएगा? बाय ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं. ओके, व्हाट डू यू नो? V is equal to IR.
Am I right? We know that by Ohm's law V is equal to IR. Then what about V1? V1 के लिए कौन सा है? R1 है ना, तो R का जगह में R1 आ जाएगा. Okay, therefore similarly क्या आ जाएगा? V1 पे IR1. I तो constant है, I तो common है for all, right? So that's why IR1. V2 के लिए क्या आएगा? IR2. क्योंकि V2 जो है किसमें? रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस में. ऑलराइट. एंड V3 के लिए क्या आएगा? IR3. ऑलराइट. So all this value we will substitute. We will substitute all these value in equation number 1. Okay. So this point. And ये V जो है, okay, total voltage वो किसका है? ये सीरीज का है. Okay, तो हम लोग VS लगा सकते हैं. No problem. Okay, don't worry. For this one, we'll write there, and afterward we can change. Okay, so this is all about this one, and then substitute kariga. Okay. Whose name is not working? I don't know. Okay, so here what will come? Substituting the value of values of V, V1, V2 and V3. Okay, in equation number 1. और नहीं तो शॉर्टली क्या लिख सकते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, वो भी चलता है. ओके, चलो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को ये है एटलीस्ट लिखता है. देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है. तब तो V के जगह में क्या था? V इज इक्वल टू IR था ना, तो हम लोग V के जगह में क्या लिखेगा? IR. V1 के जगह में V1 इज इक्वल टू IR1 है, तो IR1 plus IR2 plus IR3. हाँ, ये मिल गया. Okay, then what you see here, IR ये सीरीज में आने जा रहा है, फिर लास्ट में कंप्लीट करेगा. ओके, सब में क्या है? सब में I है, I है, I है ना, तब तो क्या होगा? I कॉमन लेगा. We'll take the common I. Then इधर में क्या आ रहा है? R1 plus R2 plus R3. Okay, R1, R2 and R3 सब मिल गया. Okay, then क्या करते हैं? What do you do here? Okay, you see twice x is equal to x. Okay, और नहीं तो हम लोग twice x is equal to 3 करते, sorry, 2 करते समय क्या करना था? हाँ, ये इधर में x को रखकर 2/2 फेंकता है ना मैथ्स में, right? So like that, हम लोग R1 plus R2 plus R3 के साथ में कौन है? I है ना, I को इधर फेंकते समय क्या आएगा? This will divide. R को हम लोग ये I ने डिवाइड करेंगे. Okay, this when we throw here multiply है ये दोनों के बीच में, right? तो multiply वाला वैल्यू फेंकते समय उसको डिवाइड करता है. Just keep in mind. इधर में कुछ प्लस होगा तो इधर फेंकते समय साइन चेंज करता है in maths, right? Then here comes only R1 plus R2 plus R3. इधर में क्या हो गया? ऊपर का I, नीचे का I का R. Then here comes R is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, हम लोग इधर में S डाल सकते हैं. No problem. Why? Because we are finding the equivalent resistance of the series. Okay, hence I am derived. Okay, so hence derived. So like this, we can derive the equivalent resistance of the series connection. So like that, we can derive for the parallel connections also. Yeah. Okay, note down now. Yes. Yes, Samrat. Yes. Okay, Aditya is with you now. Okay, fine. एक बार बोलने दो आदित्य को.
Aditya, can you hear me? Okay then. Hence derived. Okay, or hence proof. Okay, Aditya is with Samradata. Okay, so this is the equivalent resistance, okay, of the series connections. Okay, this is all about the series, and I will give you for the parallel also now. Okay, so we can continue. Okay, so up to the series, up to the parallel, I will derive today. Okay, otherwise, so I can in the next day again it will take a lot of time. Okay, so all finished, right? Okay, then now here. Equivalent resistance in parallel connections. Okay. Definition is same only. Okay, which are connected in parallel. That's only we have to change. All right. Equivalent resistance in parallel. Okay. Okay, equivalent resistance in parallel and its derivations. And its derivations. Okay, so here definition will come here. The sum total resistance of all the resistors connected in parallel. You have any other class after this? You don't have now. Okay then. The sum total resistance of all the resistors connected in parallel. Okay, the sum total resistance of all the resistors connected in parallel. Okay, it's called equivalent resistance in parallel connections. Okay, so this one only. Okay, so therefore क्या आता है? ये उसके equivalent resistance में क्या आता है? 1 by RP. Before parallel? No. Before parallel. Okay. 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 और plus 1 by R4 होगा तो दो plus. ज्यादा होगा तो according to the resistance उसके value आएगा बोलेंगे. So this point. Okay, so it's derivations. Okay, now going to come the derivation. Okay, I'll wrap all these things. So for the derivations, you need a diagram of the resistance. Okay, which are connected in parallel. Okay, so I'm ready to put diagrams here. This is the okay. Okay, so from these two common endpoints, we are connected. This is the R1, this is R2, and this is R3. Told you they all have the same voltage V. They got the same voltage V. Alright, and here is the key, and here we connect this one, right? And this is positive and negative. The current I up to here is same, but all the appliances get a different current I. This is the I1, this is the I2, and this is the I3. Okay, because they are connected from two common endpoints, so अलग-अलग current all of them now. So that's why only. But same voltage is there, right? Yeah. Okay, so this point only. Okay, and here derivations. Okay, here that's the point. Here is here resistor.
R1, R2, and R3 have same voltage, or you say we can say one on the same voltage. Okay, no problem. Okay, have the same voltage. I make it solve. Okay, but have different current. I1, I2, and I3. Okay, but have different current I1 flow. Okay, with them respectively. Okay. Here resistors R1, R2, R3 have the same voltage. Okay, but have different current I1, I2 flow. Okay, flow with them respectively. Okay, that means the R1 play I1, R2 play I3, R3 play I3 like that. Okay, so therefore total current I is equal to I1 plus I2 plus I3. ओके अलग अलग करेंट फ्लो करता है ना इसलिए टोटल करेंट को निकाल देगा हम लोग इधर में नो प्रॉब्लम ओके देन इधर में भी सेम थिंग बाय ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग क्या बोला था V is equal to IR और नहीं तो RI you find the value of I therefore क्या आ रहा है I is equal to V by RI है ना V by R okay so similarly okay I1 के क्या है that's the questions okay okay similarly okay for I1 के लिए क्या आएगा V by R1 क्योंकि all have the same V so will not change V but only R. I1 is for what? For whom? This is for resistance R1. I2 is for R2. I3 is for the third resistance, right? Okay, so like here, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. Now, so now substituting. Now substituting the values in equation number 1. Okay, substituting the values डायरेक्ट लिख सकते हैं no problem. Okay, so therefore क्या आएगा ये at least लिखता है equation को I1 plus I2 plus I3. Then I के वैल्यू में क्या आ रहा है जैसे कि V by R1 is sorry not R1 right V by R this one right is equal to V by R2 क्या लिख रहे हैं R1 plus V by R2 plus V by R3 then हम लोग इधर से क्या कर सकते हैं what is common what V by R is equal to V कॉमन ले सकते हैं V कॉमन लेगा तो 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 ओके देन इधर में R है ओके तो R को इधर फेंकने से भी क्या होगा जैसे कि V by R into क्या इधर फेंकेगा तो नीचे में रहेगा ना मींस लाइक इधर से V by R है ये R के नीचे में V रहेगा ओके तो हम लोग क्या करता है इधर में V by R into इसके नीचे में 1 आता है 1 by V आता है तो V भी काट कर आता है राइट तो इसलिए हम ये सब स्टेप को नहीं लिखेगा जो लिखना है तो तुम लोग साइड में लिखो आई विल नॉट राइट तो v को इधर फेंकने से 1 by v आ जाएगा इज इक्वल टू 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 ये v और ये v कैंसिल कर क्या आ रहा है व्हाट इट कम्स हियर दैट इज 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 ओके ये लास्ट में हम p लगा सकते हैं क्योंकि दिस इज प्रोडक्ट
Okay, तो जैसा कभी कभी होता है hands right. Yeah, so this is the what we have to do. Okay, students, that's all for today class. I hope you enjoy the class. Okay, stay safe, stay at home, and keep on study. Thank you.